practical 1.2, we shall have, uh, it is basically about dividing your stream. Okay, draw a coordinate axis at the center of the stream. The output should look something like this. मतलब जो भी आपकी स्क्रीन है उसको चार इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, उसको हमको चार इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। तो हमको बेसिकली so whatever our screen is going to be, we have to divide this something like this. Okay, now to divide this in some such kind of manner, what do we do? अब तो सिर्फ दो लाइंस की जरूरत पड़ने वाली है। ये डिवीजन करने के लिए हमको सिर्फ दो लाइंस की जरूरत पड़ने वाली है। वो दो लाइंस है, वन इज दिस पर्टिकुलर लाइन, ओके, वन लाइन, एंड अनदर दिस लाइन. So we require two lines to implement this particular part. And पिछली बार मैंने आपको बताया था कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं. Let's see how to draw a line. This was arc. Okay, this was arc. Where is the line? Okay, to draw a line, basically, we require something called as the first point and the last point. Okay, we'll be requiring the first point and the last point. So I guess it goes missing right here. Okay, okay, just to draw a line, we require the start point and end point, start point and end point. Okay, start point and end point. अभी start point and end point में जो start point होते हैं उसके दो coordinates होते हैं, that is x and y. Okay, so पहले आएंगे start point का x and y coordinates. Okay, x and y coordinates will be have to give, and then we will have to give x and y coordinates of end point. So that is something that is required. कुछ ऐसा होगा हमारा syntax. First one will be the x value, next one will be the y value of start point, and then next two set of values x and y will be the start and the end point of your end points. So this is what your particularly line requires. This is what particularly your line requires. So okay, so that is something that our line is supposed to require, and we'll be seeing that part. Yeah, so यहाँ पे देख लो, आपको ये फाइल जो है वो मिला है. In this, I have majorly given all the syntaxes of all your graphics function, and this is something that we require. So we require this particular part. So we require this particular part, that is x and y coordinates of start and end point both. So we will have to do this particular coordinates. But now how are we supposed to find out this particular coordinates for our this particular output? इस आउटपुट के लिए हमको ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? हमको दो लाइन निकालनी है, दैट इज 100%. दो लाइन निकालनी है, दैट इज 100%. So if we consider just one line for now, okay, we'll just consider one line for now. So अगर हम एक लाइन भी कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारी स्क्रीन है. Okay, and let's finish up the task of drawing one line. So one line, if we consider, we have to draw a line something like this, right? So अगर हम इसका start point ये consider करते हैं,
So this is supposed to be a start point and this is supposed to be our end point. तो हमको इसके x and y वैल्यूज चाहिए और हमको इसके x and y वैल्यूज चाहिए. Okay, so it's time to find out the x and y values of these two particular things, this two particular start and end point. After that हमारे पास एक automated point है, that is line का function है जो वो निकाल देगा. So task over here is mainly finding this particular coordinates x and y. So ये कैसे निकालेंगे? So let's try to do it. मैंने आपको कहा था हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस होता है हमारे पास. ओके हमारे पास हमेशा एक्स एंड वाई एक्सिस होता है और हमारे डिस्प्ले स्क्रीन का एक्स एंड वाई एक्सिस थोड़ा सा इन्वर्टेड होता है. नॉर्मली मैथ्स में हमारे जो एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कुछ ऐसी रहती है, दिस इज एक्स एंड वाई, बट हमारी स्क्रीन के ऊपर वो ऐसी होती है, दैट इज दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई. So if we talk about the rectangle, then on this particular rectangle, this is particularly your x-axis and this is particularly your y-axis. So this is your x-axis and y-axis. अभी स्क्रीन है, स्क्रीन की एक मैक्सिमम साइज होने वाली है. ओके स्क्रीन की एक मैक्सिमम साइज होने वाली है. जैसे हमारी एक्स एक्सिस हम जब भी ड्रॉ करते हैं हम एक मैक्सिमम साइज रहता है, वी कैन कॉल इट फ्रॉम 0 to 100. इन द सेम वे ये जो स्क्रीन की साइज है वो हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज बाय द कंपनी मेड साइज बेसिकली एंड दैट इज डिनोटेड नॉर्मली बाय पिक्सल्स एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू सो कॉल्ड पिक्सल्स में ही हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं. So that is converted into so now that is basically converted into your so-called pixels which are there. So pixels में हम लेंगे, but yeah that is not a concern. What is the measurement of it? हमारा कंसर्न है x and y एक्सिस. सो अगर हम हमारा आउटपुट देखते हैं, दिस पर्टिकुलर आउटपुट, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस. दिस इज आर x एक्सिस एंड दिस इज आर y एक्सिस. सो सबसे पहले हमको पॉइंट्स निकालने हैं. ओके हमको यहाँ पे पॉइंट्स निकालने हैं. ओके सो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? एक्स एक्सिस का ये जो पॉइंट है ये अगर आप देखते हो बराबर सेंटर में है. ओके ये जो पॉइंट है वो बराबर सेंटर में है एंड सो यहाँ पे हमको एक्स एक्सिस का जो भी सेंटर है इसकी जरूरत है. ओके ये जो भी सेंटर है इसकी जरूरत पड़ने वाली है. सो इफ यू नोटिस दिस दैट दिस इज योर y begins, this is y. सो ये y की 0 वैल्यू से शुरुआत होगा. ओके दिस इज योर 0th पॉइंट, this is your 0,0, this is your 0,0 basically. So we begin from 0 and this is your max y. क्या वैल्यू है max y की? That we'll find out, but just for information this is your max y. And for x axis this is the 0 and this is your max x. So the last point is maximum of x and maximum of y. Maximum of x क्या है और maximum of y क्या है वो कैसे find out करेंगे, that I will tell you all. There is a special inbuilt function for it which we will be using. So हमारे पास हम 0 से begin करते हैं x axis को and जाते हैं maximum of x तक, और हम y के लिए 0 से begin करते हैं y के लिए and we go till maximum of y. But over here in between we have to draw this particular line, so we require the center of x. So ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर जो x and y ये है, ओके हमारा जो x होगा वो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ x एक्सिस. सो यू कैन से दिस इज सेंटर ऑफ x एक्सिस. okay we can call it mid x, mid point of x axis. okay so एक नाम देंगे हम उसको, बोलेंगे mid x, mid point of x axis. so एक पॉइंट होने वाला है आपका mid point of x axis. so अगर आपके x axis का max x
is 800. Let's assume if this is 800, assumption है ये, अगर ये 800 है तो मिड पॉइंट क्या होगा, 400 होना चाहिए. 0 to 800 divided by 2 is nothing but 400. So if I say this, that so 1 is supposed to be your center of x, and what will be the value of y? Y तो it's just rounded to 0, so यहाँ पे होगा 0. सो हमारा जो इस पर्टिकुलर लाइन के लिए जो लाइन हम निकालने वाले हैं, ओके, इसके लिए पहली वैल्यू हमारी होगी मिड एक्स, दैट इज सेंटर ऑफ एक्स, जो हमको फिगर आउट करना है हम कैसे निकालेंगे. एंड दूसरा पार्ट है y, उसकी वैल्यू होगी 0, बिकॉज इट्स क्लियरली अंडरस्टूड इट बिगिंस फ्रॉम 0, और y तो ऊपर गया ही नहीं है, मतलब y के ऊपर हम y के लिए हमको हॉरिजॉन्टली नीचे जाना है, जो हम गए ही नहीं है, सो इट इज नथिंग बट 0. So the first point is set. Now let's discuss about this particular point right here. Okay, now discussing about this particular point, if we see this is your x, okay, x की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे सेम ही रहने वाली है, क्योंकि वो x एक्सिस है, राइट. x एक्सिस के ऊपर वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है. यहाँ पर x की कोऑर्डिनेट एंड x की कोऑर्डिनेट यहाँ पर सेम होने वाली है. हाउ? Let's take an example. If I say 0 to 100 and this is your 50, ओके, और अगर मैं 50 से यहां से लाइन निकालू स्ट्रेट ऐसे, तो मेरी एक्स की वैल्यू चेंज होगी. ये मेरा होगा, चलो लेट्स अज्यूम 75. ओके, सो एक्स इज 75. सो यहां पर जो मेरा ये पॉइंट है वो होने वाला है 50,0, दैट इज एक्स एक्सिस पे 50 एंड वाई एक्सिस पे 0. ओके, और ये जो पॉइंट मेरा होने वाला है यहाँ पर, तो 50 को 50 ही रहेगा, so x will remain to be 50. Okay, and y की जो value है, that is the maximum value of y, we are considering to be 75, so 75 will come right here, that is nothing but maximum value of y. So 50 doesn't change basically. So in this case also x की value नहीं change होने वाली है, so x is again going to be your mid x right here also, that is the center of x axis, सेम वैल्यू होने वाली है. बट यहाँ पे y की वैल्यू चेंज होने वाली है. y के लिए हम मैक्सिमम ऑफ y तक पहुंच गए हैं. इस केस में हमने इसको 75 कंसिडर किया था मैक्सिमम ऑफ y को, बट यहाँ पर हमको मैक्सिमम ऑफ y क्या है वो पता नहीं है, सो वील जस्ट राइट मैक्स y फॉर नाउ. Okay, so these are the points that we are going to use. These are the points that we are going to use. So हमको लाइन निकालनी है. दिस इज समथिंग दैट वी नो. हमको लाइन निकालनी है, दैट इज समथिंग दैट वी नो मेनली. और वो लाइन निकालने के लिए हम दो पॉइंट्स का यूज करते हैं, दैट इज स्टार्ट एंड एंड. स्टार्ट एंड एंड, और उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स रखते हैं. सो उसके लिए अभी हमारी जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे होगी, दैट इज हमारा स्टार्ट पॉइंट. स्टार्ट पॉइंट हमारा होने वाला है ये वाला पॉइंट. ओके, टॉप वाला पॉइंट. Okay, this is the top wala point, uske x coordinates, x and y coordinates, so that will be mid x. Okay, center of x, that is mid x, we are going to call it, and 0 because y pe humne, we are on the 0 of y, so x and y, that is our start point. Now going to our end points. Talking about end points, so talking about end points, endpoints are basically, it's going to be your so-called, as we discussed, mid x and max y. Mid x and max y. So यहाँ पर आएगा mid x for x-axis again and max y for our so-called y-axis. So this will be our first line which we are drawing. This will be our first line which we are supposed to draw. Okay, so ये first line जो है वो हमको मिल जाएगी, and this is how we are going to do it. But now the point is how to find out this mid x max y, ये हम find out कैसे करेंगे. अभी उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि suppose this was the example that I took. Okay, if I say this, I want to find something called as mid x. मुझे mid x को find out करना है, right? Mid x is nothing but center of x axis.
Okay, mid x is nothing but center of x axis. So if I say मेरी x axis begins from 0, और अगर मैं assume करूँ, this is my assumption for now, if I say the maximum size of x axis starts from 0 and goes up till 1200, how will you find a midpoint of x? How will we find a midpoint of x? It is very simple. You all will tell me, ma'am, 1200 का half जो होता है, that is nothing but midpoint. So I can say this 1200 is my maximum. If 1200 is my maximum, divided by 2 will be my midpoint, will be my mid, will be my center. Yes. So 600 will be my center, right? That is nothing but the maximum size, that is in our assumption case 1200. Okay, maximum size divided by 2 will be our so called midpoint. So midpoint बहुत क्लियर है, हमको x का मैक्सिमम साइज फाइंड आउट करना है और उसका मिड पॉइंट लेना है. वो कैसे लेंगे? उसको जस्ट वो जो आंसर मिलेगा हमको get max x maximum size of x जो मिलेगी divided by 2, that will be a midpoint. So this part which is there, okay, this part which is there, so हमको find out करना है यहाँ पर mid x. Mid x दो बार use हो रहा है and that is a very important value. So mid x is needed to be found out. So that is mid x is nothing but max value of x divided by 2 will give us the midpoint of x. So ऐसे हम find out करेंगे. But now the question is how to find out the max value of x. Okay, so now we require mid x क्या है वो पता चल गया, but अभी point है max value of x find out करना है हमको. Okay, we are still in question mark how to find out the max value of x. And the another question that we have, यहाँ पर हमने max y भी use किया है. So हमको max value of y भी जरूरत है, उसकी भी हमको जरूरत है. So max value of y, that also will require, okay, we can just consider it. Okay, हम बोल सकते हैं कि max value of x, यहाँ पर मैंने जैसे 1200 consider किया था. Okay, in this part I considered something called as 1200 right here. So consider मैं कुछ भी कर लूँ, I can consider it to be 700, I can consider it to be 800, but I need the real values, right? I need the real values which are there. यहाँ पे मैंने just example के लिए आपको assume करते बताया कि उसकी size 1200 हो सकती है, x की साइज 1200 हो सकती है, y की साइज 800 हो सकती है, पर हमको एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि स्क्रीन मैन्युफैक्चरर के अलग हिसाब से हमेशा अलग अलग हो सकते हैं और वो पिक्सल्स में साइज होती है. We are not concerned about the measurement, we are just concerned about our midpoint and drawing the line, getting the output basically. So size pixels में हो या size जो भी हो, that's not our concern. We should be able to find the maximum size of a screen, that is our x-axis and so-called y-axis. So how do we find this? How do we find this? आप जाके personalization जहाँ पे होता है वहां पे जाके भी find out कर सकते हो, but हमारे लिए एक function दिया गया है, उस function को पहले हम ढूंढते हैं. We'll try to find that particular function. It's an inbuilt function of your so-called part, that is yes, मिल गया मुझे. So ये जो पार्ट है वो एक इनबिल्ट फंक्शन है. यहाँ पे देखो एक फंक्शन आ गया आपके सामने. It says get max x and get max y. So this are the functions get max x and get max y. These are inbuilt functions of your graphics library, which returns, if you see the usage of this, यहाँ पे clearly mention है, returns the maximum x or y coordinates of the screen. So maximum x and y coordinates this particular functions are going to return. It's an inbuilt function, so we just don't have to think about anything else. Use this particular functions, get your maximum of x and get your maximum of y, and you're done. So we are going to use this two inbuilt functions, get max x and get max y. आपको इन functions के बारे में information होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ग्राफिक्स बेसिकली कांट बी इम्प्लीमेंटेड. हम स्पेशल ग्राफिक्स लाइब्रेरी यूज करते हैं, ये हमको पता है. सो नाउ
maximum of x and y is nothing but get max x function will give us the maximum of x, and get max y function will give us the maximum of your y. And how to find the max value? यहाँ पर क्या आएगा? Get max of x. So that will be nothing but your so-called part, that is get max x function divided by 2. That will give us something called as mid x, and max y हमको get max y से मिलेगा. So these are the coordinates that we are going to require, and we are just supposed to implement this particular part. अभी ये जो मैंने पार्ट बोला आपको, वो मैंने सिर्फ एक लाइन के लिए बोला. अभी दूसरी लाइन अभी भी बाकी है. दूसरी लाइन अभी भी बाकी है. इसका सेम लॉजिक होने वाला है दूसरी लाइन का भी. सो दैट इज समथिंग दैट विल बी डिस्कसिंग. सो यहाँ पर एक चीज की गई है, हमने डायरेक्ट वैल्यूज यूज किए हैं. Why? Let's see how we can implement this particular part. Depending on that, we'll go ahead with it. Okay. So ये लाइन भी हमको निकालनी है. Okay, that another line also we have to draw. But let's draw the first line now and see how it works. And उसके हिसाब से अपने आप second line निकाल सकते हो. And it's quite easy. I'll tell you all how to do it. The concept is very similar. हमको लाइन निकालनी है. So line है. So वहां पर भी हमको ये particular part, that is हमको अभी लाइन निकालनी है कहाँ से? So this will be the line. सो आपका ये एक्स एक्सिस और आपका ये वाई एक्सिस दोनों यहाँ से 0 से चालू होते हैं. अभी लाइन हमको निकालनी है कुछ ऐसे. ओके, सो दिस इज इन मिडल. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर लास्ट पॉइंट. So this is your first point, x and y for this particular point, x and y for this particular point. So what will be your x and what will be your so-called y? x is right now 0. Okay, right now 0 पे है, so x होगा 0. और यहाँ पर हम y के बिटवीन में है, दैट इज मिड में है. सो मिड ऑफ y विल बी रिक्वायर्ड. हाउ डू वी फाइंड इट? Get max y gives us the maximum size of y divided by 2 will give us the mid of y. So that is nothing but your mid of y. Okay, and on the another end y की वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है. यहाँ पर भी हमको x and y की जरूरत है. Okay, y की वैल्यू इज नथिंग बट mid of y. ओके, नाउ वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ x. अगर x की वैल्यू की बात करें तो हम यहाँ पे लास्ट में पहुंच जाते हैं, दैट इज वी रीच द मैक्सिमम. सो दिस इज नथिंग बट योर मैक्स x. दिस इज नथिंग बट योर सो कॉल्ड मैक्स x. सो हमको जो पॉइंट्स चाहिए वो है बेसिकली इस लाइन के लिए. वी आर गोइंग टू हैव फर्स्ट पॉइंट एज 0, 0, मिड y, comma max x, okay, comma mid y. So this is the another line that we are going to require. And how do we find out this mid y, max x and mid y? In the same way as we found out this particular part. Okay, so that is something that is there, and we'll try to implement this. So now let's go and implement our part in Turbo C. Okay, let's go and implement our part in Turbo C. So axis dot C. Okay, so that is something that we'll be using.
So now let's begin. Hash include. I'm doing C, right? Yeah. So it is stdio. 1 minute. Let me revise. I was doing C++ in the previous lecture, so I just don't want to get confused. Okay, ये सब हमको यूज करना है, ये मैंने पिछली बार समझाया था आपको, अगर भूल गए तो प्लीज पता कर लो. Okay, so that is something that will be required. Okay. Just a minute. Okay. So ये हमारा last time का program था, and we had done this particular part. I'm just going to check it if this is working. Okay, this is working. Okay, the art has come. So basically, this is working. The reason to check this part was so because I'm just using another version of Turbo C. If you want it, I can give it to you all. ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, किसी स्टूडेंट ने मॉडिफाई करके रखा है, नॉट हमारा स्टूडेंट, कोई मतलब यू नो इंटरनेट पे मॉडिफाइड वर्जन मिला है. सो उसका जो सेटअप है वो थोड़ा सा अलग है, इसके लिए डॉस बॉक्स नहीं लगता है. नहीं तो आप नोटिस करोगे हमेशा डॉस बॉक्स में आप सी यूज करते हो, तो आई डिडंट वांट टू डू दैट फॉर माय पीसी एंड आई गॉट द वर्जन, सो आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्जन. So यहाँ पर मैंने आपको this part I had made you all understand last time, that is what is G driver. GD यूज करते हैं या G driver यूज करते हैं, उन्होंने GD की जगह पे G driver ऐसा terms यूज किए. That is fine, whatever terms you use, just make sure you pass them in the function called as init graph. So that is something that is required right here. So ये होता है, and end में आएगा आपका so called something called as close graph, get cht बाद, which we have missed out. So close graph आता है. Okay, so that is the part. हमेशा पार्ट डालना कभी मत भूलना. C turbo C3 BGI ये पार्ट डालना जरूरी होता है. So आपका जो भी फोल्डर होगा, कभी कभी TC भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको ये डेटा जो है वो डालना है. Okay, so that is the path which is always required. That is the path of your graphics folder called as the BGI graphics folder. वहां पर होता है, वहां से G driver and G mode, that is graph mode and graphics drivers जो है वो डिटेक्ट होते हैं. So यहाँ पे हमने पहले arc निकाला था, अब हम जो निकालेंगे that is nothing but your so called part of uh, we'll have to remove this particular part. हमको lines draw करनी है at the center of the screen. So we will begin with drawing the lines. How do we draw the lines? For that very first part, we require certain integers. Integers are nothing but your so-called mid-x will be required, mid-y will be required, max-x will be required, and max-y will be required. So these are the four integers that we'll end up requiring. Okay, and after that, we will go to the implementation part of this. So going to the implementation part of it, we have to find out what is mid-x and what is mid-y. We have to find out what is max-x and what is max-y. So writing over here, max-x is nothing but get max-x and the function that I told you, right? And then there's going to your max y is nothing but your get max y
okay, function. Then we have to find something called as mid x, okay, which is nothing but your max x divided by 2, and your mid y is nothing but your max y divided by 2. So we have got the values clearly, maximum of x-axis, maximum of y-axis, and so on. Now it's time to draw the line. और लाइन के लिए हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम एक लाइन निकालेंगे एंड फिर दूसरी लाइन निकालने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस टू लाइंस. सो टू ड्रॉ द लाइंस हमने कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किए थे. So let's take the first line which we used. It was basically your सबसे पहले आपका आता है mid x comma 0 on the x-axis. Okay, mid x comma 0 comma it was something called as again mid x comma maximum value of y, that is nothing but max y. This was our first line which we discussed. बाद में सेकंड लाइन जो आती है दैट वाज मिड वाई, सॉरी इट वाज 0. हमेशा एक्स की वैल्यू पहले आती है, कभी भूलना मत. इट वाज मिड वाई, ओके, 0 कॉमा मिड वाई कॉमा मैक्स एक्स कॉमा मिड वाई. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए दो लाइंस को इंडिविजुअली ही ट्रीट करना एंड डू इट इंडिविजुअली. सो कॉन्सेप्ट्स आप वहां से देख सकते हो. मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखने का रीजन है, आई कुड मैप इट टू यू ऑल एंड शो इट, बट टर्बो सी इज अ वेरी फैंटास्टिक सॉफ्टवेयर. इसमें स्विच करना उतना इक्वली मुश्किल है. सो दैट्स द रीजन आई एम नॉट प्लेइंग अराउंड विद इट. So that is the part that is required. So with this, it should be good to go. I'm just doubtful about max x and max y. Let's see if that particular part does work. ये work करता है क्या ये मुझे पता नहीं है. So let's try this particular part. So सबसे पहले I'll just go to file and save this. And now we'll click on compile. Okay, good. We have 0 errors. So let's try to run this particular part. क्या आ गया? Okay, it works. I guess space term रह रहा है. Get max x, okay, x axis की space term रह रहा है, but yeah, it is giving us everything in right there in between. I don't know why that line has stopped, but ऐसे आपको problems graphics में दिखाई देंगे, especially turbo C में आपको जरूर this particular problems will be noticeable. that ये students ने भी मुझे बोला था कि जब ये output आता है तो पूरा जो एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस जो है वो पूरा का पूरा वो कवर नहीं करता है. दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैज वी हैव encountered before too. So that is how it is, but something is still working and that is completely fine. So that is how basically it looks. Okay.